अच्छा इससे थोड़ा पीछे नहीं हो जाएगा? आई नीड अ स्पेस ओवर हियर, थोड़ा सा इसे स्पेस दे दें। आई विल अप्लाई। ठीक है, थैंक्स जी। शुरू करता हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो अपने बंदों पे बड़ा मेहरबान है, जिसने जो सबसे बड़ी चीज़ इंसान को अता की वो बोलने का फ़न अता किया कि यू कैन टॉक, दैट टॉक गिव यू एन सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड दैट अंडरस्टैंडिंग stay in your life for all times to come. And I am especially thankful to Babar Wahid Saab and Ahmed Qayyum Saab. ये उनका मेहरबानी है कि मैं आज आपके सामने हूँ। आज का टॉपिक बड़ा छोटा सा टॉपिक है, लेकिन somewhere it is technical. You have to little bit give an understanding to it. Should I start my lecture from where? The first thing you must know about it: fools build houses and wise men live in it. एक शख्स एक प्लॉट लेता है, उसके बाद वो उस पर एक बड़ी इन्वेस्टमेंट करके एक स्ट्रक्चर रेस करता है। स्ट्रक्चर रेस के बाद ही प्लान्ड कि आई विल स्टे देयर एंड आई विल, पर होता ही है कि कोई दूसरा शख्स आता है एंड ही विल स्टे देयर। वो शख्स जो घर बनाता है, sometimes he is considered as the owner of the house. But when we are talking about rent laws, that become known as a landlord of that premises. That premises has been known as rented premises. The person who is in possession of those premises and utilizing the utility of that thing is known as tenant. Before going to the today's lecture, you must know about the little historical events behind this today's lecture, Rented Premises Act. Fortunately or unfortunately, in 1957, there was an act, West Pakistan Rent Restriction Act, which was later on amended in 1959. And it became West Pakistan Urban Rent Restriction Ordinance 1959. Why they came into existence? पाकिस्तान बना, नई नई जायदादें बनी, नई नई मालिक बने, बहुत से लोग इस तरह सामने आ गए कि दे हैव कंफ्यूजन्स एंड प्रॉब्लम्स विद देम। स्पेशली बहुत से लोगों के पास घर नहीं थे। Ordinance took place and just to come to resolve that issues between issues landlord and tenant. Try to understand, if being a lawyer, you don't have the ability to understand what is landlord, what is his liabilities, who is a tenant, and what is the liability of a tenant, you are unable to perform on the side of that thing. Aapko, whenever I'm talking to my students in LA College, I tell them one thing which is very important for the lawyers and especially for the beginners. Just one thing, दो तरह के वकील होते हैं, दो तरह के वकील। एक वो जो साइल की तरफ खड़ा होता है और एक वो जो उसके ओपोनेंट मसूल अलैह की तरफ होता है। One is on the side of petitioner, the other one is on the side of respondent. They both are performing their duty. फिर जब स्टडी को आगे किया तो फिर पता चला कि दो तरह के वकील और भी होते हैं। उन्होंने कहा वो कौन से होते हैं? उन्होंने कहा वो who are wasting their time in their chambers and waiting for their clients. उसने कहा अच्छा, उसने कहा कोई दूसरा भी वकील होता है? उसने कहा yes, there are other kind of lawyers. उसने कहा which one? उसने कहा जिनका इंतजार अदालतें करती हैं। Mr. Jinnah, when that great personality produced himself before the Honorable High Court or any other court, the court first question was, Mr. Jinnah, we are waiting for you. That is the respect. No, it is up to you. You want to be Jinnah or you want to be an ordinary lawyer. When you have ordinary pleas, you have ordinary result. When you have ordinary evidence, you have ordinary result. But when you have extraordinary things, extraordinary pleas, extraordinary objections in your writings, you will definitely have extraordinary results. बात कैसे करूं? बात का अंदाज बात बदल देता है। बात का अंदाज बात बदल देता है।
वरना कोई बात नई बात नहीं होती। आई एम ग्रेटफुल यू आर हियर। Today, we are here, Punjab Rent Premises Act. But in 1959, when ordinance was made, West Pakistan Urban Punjab Rent Restriction Ordinance, it was basically some to secure the tenant. The first ordinance which was made in 1951 to secure the tenant, Rent Restriction Ordinance, not to raise rent exorbitantly, not to raise rent, not to put such unconditional to the conditions, such strict conditions to the tenant. No. उनकी एक जिंदगी गुजर जाती है टेनेंट्स की उस जगह को आबाद करते, जैसे वो आबाद होता है, द टेनेंट, द लैंडलॉर्ड केम बिफोर द कोर्ट एंड सीक फॉर द eviction of that thing. So this is my, I am the owner, I am the landlord of the property in dispute, so my lord, what I only want to evict that tenant. वो कहता है why, where? उन्होंने कहा by just filing a petition. It's a petition which is known eviction petition, which is also known ejectment petition. यंगस्टर से एक बहुत बड़ी गलती होती है. Sometimes they think it is a suit. It is not a suit. It's just a petition. It's not a general law. It's a special law. जब special law है तो rent controller not as a civil judge. He will act as a rent tribunal. Special judge, rent. Rent controller. Mostly we use these three words for those presiding officers. And all those things, when 1959, they came to this conclusion कि इतना टाइम लग जाता है. पहले वो पिटिशन दायर करता है, फिर उसका रिप्लाई आता है, फिर रिप्लाई के बाद पिटिशन अपनी एविडेंस देता है, एविडेंस के बाद रिस्पोंडेंट अपनी एविडेंस देता है, रिस्पोंडेंट एविडेंस के बाद फिर उनके आर्गूमेंट्स होते हैं, देयर आफ्टर दे फाइल अ रिजेक्टमेंट ऑर्डर, दे कम टू द कंक्लूजन. मोस्टली ऐसा होता था, वो कहते थे यार इट टुक 5 to 10 years. Just for a eviction period, just it took 5 to 10 years. उन्होंने कहा नो, उन्होंने कहा देन उन्होंने कहा ट्राई टू मेक अ चेंज इन इट, एंड दैट वाज डन इन दिस act which we known as Punjab Rented Premises Act. You know there are two kinds of trial. Anybody who can help me in this question? Two kinds of trial. What is a general trial and what is a summary trial? समरी ट्रायल कहां से है? बेस है बादशाह के पास एक आता है, वो कहता है कि इसने मेरे साथ ये ज्यादती किया, विदाउट गिविंग हियरिंग टू द अदर पार्टी, कहता है गो एंड मेक अ डिसीजन, गो एंड किल दैट मैन. Summary procedure, which will be definitely in your mind when you have to go on to study in CPC Order 37. फर्क दोनों में क्या है? जब आपने अब इजेक्टमेंट पिटीशन लिखी और आपने वो फाइल कर दी, जैसे ही इजेक्टमेंट पिटीशन फाइल हुई, द कोर्ट, ऑनरेबल रेंट कोर्ट, आपसे दो बातें पूछेगा. पहली बात पूछेगा, इज योर रेंट डीड इज रजिस्टर्ड वन? If your answer is yes, वो कहेगा then I will proceed. If the answer is no, that rent deed, that rent agreement, that agreement of tenancy is not a registered one, then what we have to do? The only thing we have to do is that, first of all, if you are landlord, you have to pay a penalty. %, being a landlord. You will submit that penalty of 10%, which will be amount your monthly rent, which will be definitely divided into 12, and thereafter you have to impose 10% on that rent deed. Thereafter, if you are say I am a tenant, but I want protection from a landlord and I want to come this court, the court again put a calm. Although you are a tenant, are your rent deed is registered? उसने कहा no my lord, I have, but it is not a registered one. उसने कहा then, उसने कहा 5% penalty imposed to you. Thereafter, you filed a petition, ejectment petition against a tenant, and what I have to do, and you will go give a notice. Not notice, ordinary notice, because it is not an ordinary law, it is a special law. So notice is a schedule.
which is appended with the rent petition, which is appended with this act, you must have to see it. उसमें नोटिस में क्या लिखा है कि मेरे पास जैसे ही तुमने आना है, you are bound by this notice, within 10 days come with that thing. Not an ordinary notice कि पहले आप नोटिस दे रहे हैं, फिर आप वकालतनामे के लिए टाइम दे रहे हैं, you want a memo filed, a memo of a... No, it is not, totally different. इसने स्पीडी ट्रायल टेकअप करना है. इसमें हर बंदे को ये राइट नहीं मिलेगा कि वो जो बताना चाहता है वो कहेगा फर्स्ट यू हैव टू गिव जस्टिफिकेशन फॉर इट कि यस आई हैव अ स्ट्रांग केस, काइंडली गिव मी हु टू कम दिया. कैसे? कहता है कुछ भूल हुई है तो सजा भी कोई होगी, कुछ भूल हुई है तो सजा भी कोई होगी, सब कुछ मैं बता दूंगा, जरा प्यार से पूछो. कैसे? एक छोटा सा राइट. उन्होंने कहा हमने समरी ट्रायल करना है. समरी ट्रायल में इट इज नॉट राइट ऑफ एवरीबॉडी कि वो हर बंदा जब चाहे जिस तरह का चाहे डिसीजन टेकअप करे. नॉट, इट इज नॉट. सबसे पहले आपको एक पिटीशन सबमिट करनी पड़ेगी जिसमें 99.9 बच्चे गलत होते हैं. पिटीशन इज योर रिटन स्टेटमेंट, पिटीशन इज योर रिटन रिप्लाई. सब कुछ पिटीशन में डालना है. सिर्फ ये कह के कि इट्स अ पिटीशन, लीव टू कंटेस्ट, आई जस्ट फाइल इट. नो. You have to incorporate all your defense, all your case in that petition with this prayer that kindly allow me to contest this case. Second important thing, the moment you file your written state application for leave to appeal, as in your file in banking court, as you file in leave to defend, leave to contest, they both have the same meaning in this act. But we prefer leave to contest, which is usually known LTC. You must have give reasoning why you have to contest. But where the problem accrues, first of all, you should know the rent agreement. What is the rent agreement? What is an agreement? Simply go through it. What an agreement? Proposal, acceptance, consideration, sufficient for legal agreement, which should be a lawful act. जब तक आपकी रेंट एग्रीमेंट पे ग्रिप नहीं होगी, you are not in a position to give a proper reply to that application or to file a proper application in that respect. For that purpose, to understand all these small things, you must go to section 2 of this act, in which first thing 2D, a definition of landlord. Furthermore, pagri 2C, then rent defined, then rental tribunal defined, then special rent defined, and lastly in 2 within bracket small l, tenant defined. First of all, don't create a criteria of yourself. You have to be within the meanings of that definition which has been prescribed in this act. किसी से कहने से कोई सही या गलत नहीं होगा, हमें उसके डोमेन में आना पड़ेगा to tell the court. If you say I am a tenant, okay, you are here or and face the trial. But if you come with the new stand, sir, I am in possession of the house, house is admitted, my possession is admitted, but the status you are opposing on me being a tenant, I am not a tenant to it. Court ke, oh, what you are? Who are you? मैंने कहा I am in possession by virtue of mortgage deed. I took this on mortgage. This house was pledged to me. Reasoning there, I am not in the domain of tenant. The moment you prove this fact to the court that you are not a tenant, the jurisdiction of rent control ousted. अक्सर बच्चे इस बारीक बात को नहीं समझ सकते.
रेंट प्रोसीडिंग्स टू द एक्सटेंट ऑफ लैंडलॉर्ड और टेनेंट फॉल करेंगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत से बच्चे वो कहते नहीं मेरे घर में मेरा अजीज है, मेरा रिश्तेदार है, मेरा भाई है, वो जस्ट टू अडॉप्ट अ small and shortcut to it, they just what they want, they file ejectment petition, but later on they have to face that troubled water. उसने कहा suit for, you should go for suit for possession under section 8 of specific defect. You have to go suit for possession again under section 9 of specific defect. It is for them who have ownership claims, it is not for tenants. The counsel of the petitioner always tries to tell the court, to assist the court, that respondent is a tenant, and if a good lawyer of respondent have, he will take a plea. Gentleman, I am in possession, but I am not your tenant. अगर मैं टेनेंट ही नहीं हूं, मेरे पे कोई प्ली अप्लाई नहीं करेगी. वो कहता है सर डिफॉल्ट, उसने कहा सॉरी जेंटलमैन, मैंने रेंट पे लिए नहीं, आई एम नॉट अ डिफॉल्टर. You have to minutely see that things. There are only two defenses in rent cases. One, either you are a tenant or either you are not a tenant. At that time, ball is in your court. Either you have it or either you kick that ball out of that court. But if you are proved, if you proved later on that you are not a tenant, you will have a very good case. That ejectment definitely die. एक दूसरी और प्रॉब्लम जो बच्चे इसमें अक्सर प्रैक्टिसिंग लॉयर्स के लिए दिक्कत होती है, प्रैक्टिस, यू मस्ट हैव हर्ड देयर आर टू काइंड्स ऑफ डिक्रीज. Section 2 of CPC, what it elaborates? It elaborates there are two kinds of decrees. One is preliminary decree, second is the final decree. But what is in rent? Other decree, usne kaha, no, I am not a court, so I cannot pass a decree. But there is a paper which is attached that order, which was passed by the London Rent Controller. It's an ejectment order or it was an order of dismissal. There is a paper. People, youngsters consider it's a decree. It's not a decree, it's a memo of cost. It does not fall in the domain of decree. इजेक्टमेंट पिटीशन हुई, आप अपील करेंगे तो आप यही कहेंगे कि इजेक्टमेंट ऑर्डर पास बाय मिस्टर सो एंड सो. आप ये नहीं कहेंगे जजमेंट डिक्री पास बाय मिस्टर सो एंड सो. इट्स अ रेंट ट्रिब्यूनल. इस बात को बारीकी समझ लें. फर्स्ट ऑर्डर विच वी यूजुअली इंटरलोकेटरी ऑर्डर. All such orders, kindly see to it, all such orders which was passed during the procedure from the start and from the end till the end shall be mostly considered as notice दिया जाए, interlocutory order, PLA दाखिल की जाए, interlocutory order, evidence पेश किया जाए, interlocutory order. Please give a thought to it. If there is something not good, something is unjust in the interlocutory order, you have no remedy except the constitutional petition. You took objection that the ejectment petition is bad for non-gender of necessary parties. That was rejected by the court. You got it? No. कुछ चीजें बच्चे बिल्कुल गलत लेते हैं. हर ऑर्डर पास होता है, वो समझते हैं कि लाइक सीपीसी देयर इज अपील अगेंस्ट इट. 1959 एंड सेक्शन ये जो 2007 का है, 9 का, ये पंजाब, इनमें एक डिफरेंस एंड तक चलता रहता है. पहले क्या था? उसने कहा जी व्हेन देयर ऑर्डर वाज पास्ड बाय द लर्नड ऑनरेबल रेंट कंट्रोलर, व्हाट द रेमेडी वी हैव? उसने कहा नथिंग टू वरी, इफ इट इज अ रॉन्ग, इफ इट इज अ erroneous order, you think that order is against law, justice, no need, you preferred appeal. It was known FAO, first appeal against order. Later on, you come to the knowledge that, sir, there is against order, that was not correct, and that was for the first appellate authority, Learned ADJ, Additional District Judge order passed. The Honorable High Court just put at one question at that time, is this a commercial building? Yes, sir, it's a commercial building. Is there any business running it? Yes, it is used for running commercial business. Okay. If it is so, then go for SAO, second appeal against order. But in this act, no second appeal is provided. आप किसी वजह से किसी इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर के खिलाफ आप
ओपिनियन रखते हैं कि इसे इस तरह नहीं पास होना चाहिए था, या समथिंग इज नॉट गुड इन दैट ऑर्डर, यू कैन ओनली नॉक द डोर ऑफ द हाई कोर्ट इन कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन. द मोमेंट बच्चे जैसे जाते हैं ऑनरेबल हाई कोर्ट के जजेस के पास, दे पुट वेरी फर्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज वेरी टेरिबल. यस जेंटलमैन, यस मैडम, व्हाट ब्रिंग्स यू हियर? Then you have to tell the court, there is no remedy, my lord. But the order is so much erroneous that it will definitely kill us. And it will totally injustice to my client. वो कहता है, okay, proceed with it. Interlocutory order, no appeal. Interlocutory order, no revision. Interlocutory order, no review. But what about the final order? Only one appeal that was given. Kyun? Speedy trial, speedy trial, speedy trial. Justice hurried is justice buried. Somewhere that reflection you find in this act. थोड़ी थोड़ी बातें अब सेक्शंस के हवाले से I will discuss so you can give an understanding. प्रॉब्लम्स क्या होती हैं? क्लाइंट्स आपके पास आते हो, कहते हैं सर I am a tenant. कहते हैं very good, then I want to pay rent, but landlord is not going to accept it. Landlord rent इसलिए accept नहीं करते just to create a default on the part of the tenant. 99% ऐसा होता है हम पेमेंट करते हैं by we don't get receipt. एक ऐसी पेमेंट जो विदाउट रिसीट हो, that is not acceptable under the law. The moment, sure. That is acceptable. It should be in a written form. It should be about. मैं उसी procedure पे पढ़ रहा हूँ. I'm happy you are with me. Thank you for that. First of all thing, I come to the court, sir. I'm a tenant in the premises and I want to pay the monthly rent. Court without going to what is the main reason apparently court. You really want that? Acha. Do you have any account of your landlord, gentleman? उसने कहा no sir. Okay. Did you try by way of money order? No sir. Then what brings you here? सबसे पहले कोशिश ये करनी है कि उसे आपने मनी ऑर्डर देना है, so to give a cause of action to your petition. कि I want to tender rent but I find no way out. I have no account of landlord. And the second most important thing, what the thing I have, I want to give money order. That money order he didn't receive. Why he didn't receive? Just to create a default on my part. Just to create कोर्ट के ओके जेंटलमैन वेयर आप कहते हैं मनी ऑर्डर की रिसीट मेरी पिटीशन के साथ है. उसने कहा ओके ठीक है जेंटलमैन, कितना रेंट है? रेंट डीड भी लगी है, वो रेंट पड़ता है. एंड ही गिव यू परमिशन, काइंडली डिपॉजिट. वेयर टू डिपॉजिट? इन द कोर्ट. आपको एक खास अकाउंट का नंबर दिया जाता है, आपने उसमें टेंडर करके उसकी रिसीट अपने पास रख लेनी होती है. फिर उसके बाद कोर्ट नोटिस देता है लैंडलॉर्ड का कि जेंटलमैन you kindly come and tell why you are not interested. वो कहता है सर इसलिए इंटरेस्टेड नहीं हूं कि अब किराया बढ़ना था या अब मैं इसे निकालना चाहता हूं या आई डोंट वांट टू कंटिन्यू दिस टेनेंसी एनीमोर विद दिस जेंटलमैन. कहता है ठीक. सबसे पहले जिस चीज में रेंट से बचना है, डोंट ट्राई टू क्रिएट एनी फॉल्ट ऑफ. क्लाइंट है उससे फौरन पूछो कितना टाइम है, उसे कहो बात ये नहीं, पहले जाके रेंट डिपॉजिट कर बाय वे ऑफ मनी ऑर्डर. डिफॉल्ट, फैटल ग्राउंड, फैटल. दूसरी ग्राउंड जो सबसे ज्यादा, जिसके लिए बहुत ज्यादा वकील को खासकर डिफेंस क्रिएट करना पड़ता है डिफेंडेंट को, सबसे बड़ी प्ली जो इस एक्ट में उन्होंने लिखा की है, उसने कहा सबसे इंपॉर्टेंट प्ली ये है कि टेनेंसी पीरियड विच वाज एडमिटेड बिटवीन द पार्टीज दैट एक्सपायर. मैंने 3 साल के लिए दी थी, 3 साल पूरे हो गए, मेरी दुकान खाली करो. वो अब कहता है 3 साल में तो मेरा कारोबार चलना शुरू हुआ है. मैंने 5 साल के लिए दुकान दी थी, 5 साल के लिए, 5 साल पूरे हो गए, यहां से निकलो, गिव मी अ डिफेंस. जब भी कभी बीइंग ऑन द साइड ऑफ पिटिशनर, इट इज द बेस्ट ग्राउंड कि दैट पीरियड हैज बीन एक्सपायर्ड. आई डोंट वांट टू फर्दर कंटिन्यू विद दिस टेनेंसी, सो काइंडली ओके. And when you are on the side of respondent, you have to create a ground. Sir, first thing, I am not his tenant.
He took loan from me. उस वक्त he looked from me. Thereafter we entered into a mortgage deed. उसने कहा really? Yes it is. एक गलती और स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा करते हैं, न्यू कमर्स लायर्स. They took a wrong plea with wrong words. What is that thing? Agreement to sell, agreement to sell, agreement to sell. If there is an agreement to sell and that agreement sold is oral, it is nothing but just a waste paper. Orally, agreement to sell is nothing. It will give you nothing. Just give a little mentally, you have created defense. No, that is poor defense. Okay, sir, I have an agreement to sell, but it is written one. Little, very little defense. Why? Number of judgment passed on one issue, that agreement to sell does not create a title. Please understand, agreement to sell does not create a title in favor of the plaintiff until and unless it become two things. It become a sale deed or it become you get a decree from the court on the basis of that agreement. Agreement to sell वेट करेगा, कब वजन आएगा? दो चीजें अगर आपने करगी एंड यू हैव सक्सेसफुली प्रूव, सर we executed an agreement to sell between the parties. I'm not a tenant. That was not given as a tenant. But that's, you are in purchase, yes, on the basis of agreement to sell. Usne kaha, gentleman agreement sell is such a document which you have to prove. Because Section 17 of Registration Act does not recognize, it must be proved. If you have a registered document in form of sale deed, in form of mortgage deed, in form of any other deed which you can possess your title, you can come with that document. Just oral agreement to sell, it gives you nothing. Usually बच्चे क्या करते हैं, एग्रीमेंट टू सेल कर लेते हैं और वो आते हैं कोर्ट, उसके बावजूद try to understand, agreement sell is nothing, na kiraya rukega now, they can easily evict you out from it on the basis of that agreement to sell. Second important thing, like others, sure. True. Very good. Use, as I consider, you paid a handsome money as earnest money. True? True. But here law stands. You have to go for specific relief act. You have to seek contract act. It's just an agreement. मैंने एक बात की है, प्लीज रिपीट करता हूं, agreement to sell might give you a protection under civil law. They filed a suit for possession against you. You can say, I am not an adverse possession gentleman. My possession is not illegal. But the thing I have, I am sitting here on the basis of agreement to sell. Section 53, बीच में थोड़ा सा एक्ट आ जाएगा कि bona fide purchaser है. He has some document with it. But not in renting position. Rent laws is not going to recognize that agreement to sell unless and until it becomes sale deed or you get a decree from the court of competent jurisdiction with respect to that agreement. Is that clear? आगे चलते. Subletting, very fatal for the tenants. You took up premises on rent by saying that I am tenant, I am just utilizing this. It means, clearly means, you have no right to further sublet that out somebody else. आपने सिर्फ उसे यूज करने के लिए लिया है, आप आगे उसे ट्रांसफर कर ही नहीं सकते. 99% होता है, एक आदमी लेता है, आगे से वो आगे सबलेट कर देता है. It is fatal for the tenants. No right being a tenant to give it further. But in some cases, tenants came forward. Sir, I have a right to have sub-tenant with me. The only question was put to him, on what basis? You have to define that thing. The real base, what is the real base? You must have a written document. Sir, it is, go kindly see clause 5 of the rent premises
of the rent agreement, it is clear cut, it has been narrated. What it has been narrated? Okay, I have a right to subtenant in my business in this premises, rented premises. But without written premises, no, you are not allowed. When you are going to have such pleas with you, you must have written things with you. Choti si baat, section 12, when you go to just a study of section 12, obligation of landlords, taxes, वो पे करेगा. Renovations, उसके ज़िम्मे है. उसके कोई राइट्स है, वो आके विजिट कर सकता है. आप समझे, there is some repairs, renovations, you can go to the landlord, but all things should be done in written way, please. Orally stands nowhere. You come to the civil courts, you come to the family court, orally, sir, this property was gifted to me, orally. Court कहता है, no, gentlemen, no. This, the plea you have taken, you have to prove that plea. And it is very, very difficult to prove oral pleas. You need a very, very high order of education, evidence to plead your case and to prove your case. Now come to the main, section 13, obligation of tenant. Tenant को क्या करना होता है? वही होता है, for that purpose. You gave on for residential purpose. Later on it came to your knowledge कि मैंने तो घर इसके लिया था, घर में इसने एकेडमी खोल ली, घर में commercial activities हो रही हैं. The moment the landlord knows, he can file ejection petition against you and tell them, okay, sir, gentleman, the purpose you are using, that is not within the domain of that rented premises, so you can't leave it. It's a very good ground for eviction. Later on, you should pay the rent properly in time, otherwise you have gone. But when you see this act, rent does not mean only rent. You have to also took liability of utility bills with you. You say, sir, I'm paying the rent, this is with me. वो कहते सर 3 बारी बिजली कट गई, 3 बारी बिजली कट गई, हम जाके खुद लगाते रहे, फिर आते रहे, फिर बिजली कटी गई, फिर आगे फिर कट गया. कभी इसकी एक मसला होता है, कभी तार बिजली कट गई, कभी पानी कट गया, कभी गैस कट गया, ये कंडक्ट है. दैट ऑर्डिनरी अंडरस्टैंडिंग से क्या आपने लिया? जस्ट इन वन थिंग कि क्या चाहिए. एक ऑर्डिनरी अंडरस्टैंडिंग ने ये दिया कि यार रेंट में तो ये डोमेन में नहीं है, लेकिन यहां रेंट में यू हैव टू टेक प्रॉपर केयर ऑफ दिस थिंग. सिर्फ ये क्या कि नहीं आप बच जाएंगे कि जहर मिलता रहा जहर पीते रहे, रोज मरते रहे रोज जीते रहे, जिंदगी तू हमें आजमाती रही और तुझे जिंदगी आजमाते रहे. Thank you. Now come to the very important section. Section 15, kindly write. Section 15 gives you the grounds for ejectment petition. It gives grounds. ठीक है? But actually you have to file petition in section 19. Grounds section 15 से take up करनी है, ejectment petition section 19 में फाइल होगी. Usually when landlord came in ejectment petition, the first plea usually he took, उसने कहा, sir, I repeating that thing, the tenancy period that has been expired, I don't want to more any relation with that gentleman, my tenant, and I don't further continue that. Okay, second thing, my lord, the second important ground is default. Sir, he's a defaulter, he's a willful defaulter. Try to understand the very important thing about default. When you took a plea of default should be willful. 1959 ऑर्डिनेंस आता है, उसका सेक्शन 5 एक अमेंडेड आ जाता है. 5 अमेंडेड क्या कहता है कि क्या बड़ी बारीक बात करता है, वो कहता है रेंट ऑफ द प्रेमिसेस विल ऑटोमेटिकली इंक्रीज आफ्टर 3 years 25% इन कमर्शियल प्रॉपर्टीज. सेक्शन 5A क्या कह रहा है? 3 चीजें कह रहा है पुराने ऑर्डिनेंस में 1950 में. आई एम पुटिंग एग्जांपल व्हाट इज विलफुल डिफॉल्ट सो इट गिव्स यू अंडरस्टैंड. 5A सेक्शन ये कह रहा था
पंजाब अर्बन ट्रांसमिशन ऑर्डिनेंस 1959 का अमेंडमेंट के बाद कि जैसे ही 3 साल पूरे हो जाएंगे, यू हैव टू डू ऑटोमेटिकली रेंट हैज टू बी इंक्रीज ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी। 3 साल पूरे हो गए, कमर्शियल प्रॉपर्टी होगी, ऑटोमेटिकली अप्रूव होगा। एक शख्स उठाओ, उसने फाइल की जजमेंट पिटीशन कर दी एंड दैट जजमेंट वाज सक्सीडेड टू द ऑनरेबल अप टू हाई कोर्ट, बट देन द मैटर पुर्सूड टू द apex Supreme Court. What happened to it? उसने कहा, gentleman, it's true, he's a defaulter. He did not pay the rent, which was automatically increased. Their lawyer took a plea, sir, word automatically. It is not my duty to tell him to increase the rent. This is a bare reading of that act. Automatically mean खुद से उसने 3 साल होने उसके किराए ने बढ़ जाना है। लेकिन होता क्या है कि वो जाता है, वो कहता है, सर मुझे कोई नोटिस नहीं आया, मुझे इतला नहीं आई। तो सुप्रीम कोर्ट यूज विजडम, उसने कहा वी हैव टू माइन्यूटली सी डिफॉल्टर, विलफुल डिफॉल्टर। एक आदमी को आप खुद जाके कत्ल करते हैं विद द इंटेंशन, विद रिपीटेड फायर्स, क्या इंडम होगा? दैट विल बी अ मर्डर। एक आदमी का आप गाड़ी रिवर्स कर रहे हैं, पीछे आके लग गया, बंदा वो भी मरा है, बट यू कैन नॉट कंसिडर एज अ मर्डर। एक कत्ले खता है, एक कत्ले बिल सबब है, और एक आप खुद जानबूझ के मार देते। यू किल दैट मैन, डिफाइन द सेम इज मैटर्स हियर। हमने विलफुल डिफॉल्टर पे रहना, हैबिचुअल डिफॉल्टर पे रहना, जो यूजुअली लोग टेकअप नहीं करते। उन्होंने कहा ये ठीक है कि ऑटोमेटिकली इट हैज टू बी इंक्रीज आफ्टर 3 years, बट डिड यू गिव सर्व एनी नोटिस? उसने कहा नो सर, आई डिड नॉट सर्व। देन व्हाट वुड बी द फेट? The case was remanded back. Landlord, I already told about it a little. Landlord, you can easily find the definition in 2D. But I put a question to you, so you can give an understanding to it. एक शख्स उठता है, आपके खिलाफ बेदखली कर देता है, कहता है सर ये मुझे किराया नहीं दे रहा। आप कहते हो यू आर नॉट माई टेनेंट, वो कहते हैं सर आई एम विद माई सेल डीड, ऑल टाइटल डॉक्यूमेंट्स आर विद मी। Later on it came into your knowledge he is the new landlord. नया लैंडलॉर्ड है, आपको तो पता ही नहीं उसने कब ली कब बेची। इसीलिए पंजाब रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट ने एक सेक्शन उसको भी दिया। यू काइंडली गो टू द बेयर रीडिंग ऑफ दैट सेक्शन, सेक्शन 30। It clearly states the moment you purchased a new property, it is incumbent upon you what to do to give a notice to that gentleman who is known as a tenant. I am your no honor. Now you are duty bound to pay rent me or. If you did not give him a notice, if you did not serve him a notice, you cannot take a plea of default. First, you shall be heard, then you shall be condemned. उसने कहा gentleman, it came to your knowledge, yes sir, I received a notice from the, उन्होंने कहा then there is no justification, you are a willful defaulter, so kindly leave the house, you are hereby ejected from the house in question without wasting time. Sometimes बेदखली होती है, एक इजेक्टमेंट पिटीशन दायर करता है, डिस्प्यूट बिटवीन समटाइम्स कम आ जाता है, वो कहता है सर रेट ऑफ रेंट इज 5,000 सर, but tenant came with the pleas, no my lord, rate of rent is only 3,000. At that juncture there should be a tentative assessment, जैसे कि families में होता है. Court can say okay, you are claiming for 5,000 and the respondent you are claiming for 3,000, so you are hereby directed to deposit monthly rent. You are hereby directed to deposit monthly rent without any delay at the rate of 5,000 per month. आप कहते हो मैंने इसे 3,000 का कहा, इसने 4,000 का दिया। नो, लेटर यू हैव टू एविडेंस, विन यूर एविडेंस टू बिल्ड दैट रेंट इज फॉर 3 years. उसने कहा आपने 5 क्यों किया? सर हमारा तय हुआ हर साल बाद 10% बढ़ेगा, 4 साल हो गए हैं, वो 3 से 5 पे आ गए। पहले होता था एक फर्क जो पहले लैंड्स में होता था कि दुकान का किराया ऑटोमेटिकली होता था, अब जो कुछ होना है विद इन डोमेन ऑफ एग्रीमेंट टू सेल। कोर्ट ये भी ऑर्डर कर सकती है कि रिस्पोंडेंट इज सेल बट डायरेक्टेड टू डिपॉजिट 4,000 इन द अकाउंट ऑफ द लैंडलॉर्ड।
it can be done. Next. Non-compliance of order and interlocutory order passed by the learned rent controller with subject to deposit the rent. कोर्ट ने कहा कि आपने हर महीने की 10 तारीख तक इतना किराया जमा कराना है. अगर वो डिपॉजिट नहीं हुआ, कोर्ट विल नॉट ग्रांट यू टाइम. Never ever court will grant you that time. You will that time may say by extended. No. You will be considered as a defaulter and you have to penalize for that. Section 21, very important. You file ejection petition. Thereafter, notices which has been prescribed in Schedule 1 of the rent premises. उसके तहत नोटिस देने हैं. But if those notices are not according to that Schedule 1, that notice shall not be considered as a real notice. No action can be taken. It's a mandatory provision in it. With that notice, you have to file ejectment petition, copy of ejectment. With that notice, you have to file all relevant documents which are relating to your case with that petition. And in case that ejectment petition which you have filed, that was dismissed in default due to any reason, due to non-appearance, what you have to do, you can file an application for restoration of your ejectment petition, but within 30 days. Application for restoration within 30 days by the petitioner. Very important thing, दो बातों में confuse नहीं होना. But if an order about ex parte order against a tenant, then within 10 days. One very important factor of this application, of this proceeding is that an ejectment petition has been filed against your client. Unfortunately, he was proceeded ex parte. First, there is an ex parte order, and later on, there is an ex parte ejectment order. आपके क्लाइंट के खिलाफ एक कार्रवाई एकतरफा का ऑर्डर हो जाता है, एक तरफा डिक्री पास हो जाती है, एक तरफा बेदखली का हुक्म हो जाता है. व्हाट टू डू? सिर्फ जाके ये नहीं कहना फाइंड द डिस्टेंस, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सीपीसी में किसी के खिलाफ हो जाता है, वो पार्ट सेटिंग असाइड एक्स पार्टी जजमेंट की या एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स की एप्लीकेशन दे देता है. यहां पे एक चीज का एहतियात करनी है. यू हैव टू फाइल एप्लीकेशन for setting aside ex parte order with leave to contest. दो एप्लीकेशंस आएंगे. बहुत ज्यादा केसेस सिर्फ इस वजह से खराब हो जाते हैं कि बच्चे सिर्फ एप्लीकेशन फॉर सेटिंग असाइड एक्स पार्टी देते हैं एंड दे इमेजिन कि पहले ये सेट असाइड होगा, देयर आफ्टर वी विल गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू कंटेस्ट दैट केस और टू फाइल दैट एप्लीकेशन. लॉ से नो. The moment you appear before the court, within 10 days, you are bound to file PLA, petition leave to contest. Again, time cannot be extended for filing leave to contest. 2009 CLC 1334, 2011 MLD 682, 2021 Supreme Court Monthly Review 1430. Not a single day can be
added later on. This is about rent, their deposit, and please leave to contest. But another aspect of this thing, if there is relationship denial, he claiming you are tenant, you claiming I am not your tenant, then there should be no order for deposit of rent. Until and unless your status has been recognized, admitted as a tenant, thereafter it's your liability to pay rent. If you said, I am not your tenant, but you also deposit rent, it's contumacious denial. You must have to avoid contumacious denial. जो बात कहनी है उसी पे स्टैंड लेना है, उसी पे खड़े होना है, दो बातें नहीं. आप क्लेम कर रहे हो कि मैं मालिक हूं, उसी प्रॉपर्टी का टैक्स आ जाता है तो आप क्या कहते हो मैंने टैक्स नहीं देना, पिटिशनर से लो वो क्लेम कर रहे हैं. नो नो नो, सच कॉन्टोमेशियस एक्ट कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड. A little bit judgments on this aspect. No order of payment of rent when there is denial of relationship between the parties with respect to tenancy. 2016 Supreme Court Monthly Review 2186. 2018 CLC Notes 42. 2000 Supreme Court Monthly Review 632. Basically, ये सब judgment is the milestone judgment, which was the first and the basic judgment. जब भी वो civil courts में आता है, rent का matter कोई पढ़ने में interested होता है, तो this is the bit that was reported in 1983 Supreme Court Monthly Review 1064, Rahmatullah's case. I repeat, very important case, 1983 Supreme Court Monthly Review 1064. It was discussed in that case. If there is denial of relationship, it is the duty of the court to advise the landlord to make his title clear and don't to pass an order for ejectment. टाइटल ओनरशिप का टाइटल जब भी उसकी बात होगी ज्यूरिसडिक्शन रेंट कंट्रोलर के हाथ से निकल जाएगी. इट विल एंटायरली द एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट्स. Now I will just give you the last and final words about this Rented Premises Act. In case mostly leave to contest was not granted, especially when tenancy admitted. आपने कहा कि जनाब that tenancy proofs were later on extended between the parties. You have to come with that document. Orally it is not acceptable. Second thing, but if you took a plea that there is no relationship, court कहता है okay, come forward, now leave to contest granted to you. Now what we have to do? एक अभी तक बात हो रही थी लीव ऑफ कंटेस्ट ग्रांट नहीं हो रही, वो कहता नहीं, you don't have such sufficient grounds, so leave of contest is not granted and ejectment order is hereby passed against you without recording evidence. Ejectment petition filed, you filed leave to contest, that was refused by the learned rent controller, no further proceeding, just an ejectment order passed and you will be out of the court. But if that leave to contest has been accepted by the learned court, then what to do? Court will call first the evidence of the petitioner, because petitions say when you are going to file ejectment petition, what you have to do, you must come with two affidavits.
इजैकुलेट पिटीशन के साथ 2 एफिडेविट्स आएंगे जिसमें यह लिखा होगा कि वी आर गोइंग टू सपोर्ट दिस जेंटलमैन हु इज द टेनेंट, who is the landlord. In the same manner, when you have to file leave to contest, you have to file affidavits of 2 witnesses. Why they all took such decision? Amumanly you have seen examination in chief. No, उनका नहीं, special law है. हमें इसे expedite करना है. पिटीशन दी है, 2 गवाहन का नाम लगाओ. लीव टू कंटेस्ट दी है, 2 गवाहन का साथ नाम लगाओ. लीव टू कंटेस्ट रिमूव खारिज होगी. No other remedy, go and file an appeal. But if leave to contest granted, here case starts again. Here shoe pinches to the landlord. Who can come? He will come with personal evidence, then first witness, then second witness, all documentary evidence, and claiming and proving somewhere his ownership and his relationship with the tenants. Later on the same manner, the respondent came himself in the witness box, then his witnesses and all documentary evidence. Evidence होगी, उसके बाद court will give an opportunity of final arguments. Thereafter, they pass an order, and all this scene get concluded. Is any question clear? So, before saying goodbye to you, just one word, and what is the last word, and it's a prayer on my behalf. I really welcome all of you. Just one word. जिंदगी दी है, जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना. अल्लाह ताला की जात. जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना. पांव बख्शे हैं तो तौफीक के सफर भी देना. जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना. पांव बख्शे हैं तो तौफीक के सफर भी देना. मैं तो खुश हूं खाना बदोशी में भी, लेकिन अगली नस्लें तो ना भटकें, इन्हें घर भी देना. थैंक्स. क्लियर? थैंक्स.